नमस्कार। आज मैं आपको आयुष मिनिस्ट्री का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बताने के लिए आपके सामने आया हूँ कि हमारे ऊपर यानी आयुर्वेद के ऊपर जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है और जो एक सही भी है कि वी डोंट हैव एनी डाटा। कोविड की पहली लहर में आपको याद होगा कि आयुष मिनिस्ट्री ने संजीवनी ऐप के थ्रू बहुत बड़ी संख्या में आयुष संजीवनी ऐप के थ्रू बहुत बड़ी संख्या में आयुष के स्टेक होल्डर से कहा गया था कि और जनरल पब्लिक से भी कहा था, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाटा कलेक्शन एक है जो करोर्स में है। उसका अभी कंपाइलेशन होकर एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ने एक बहुत पॉजिटिव स्टेप ये लिया है कि अब उन्होंने आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की खास बात ये है कि एनीवन हु इज ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स can upload their success stories in a given format. And one more important thing is that they do not restrict these experiences to the Indian territory only. This portal is open for all the Ayurveda lovers or the Ayurveda physicians who are treating COVID-19 patients across globe using Ayurvedic interventions. ये ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से इसमें आपको रजिस्टर करना है, किस तरीके से आपको केस रिपोर्ट करना है। एंड आई होप कि ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड सेटर होने जा रहा है आयुर्वेद के लिए और आयुष की अन्य स्ट्रीम्स के लिए भी, बिकॉज मेरा कंसर्न आयुर्वेद से है। तो अब आगे हम दिखाएंगे कि इसमें आपको कैसे साइन अप करना है, किस तरीके से साइन इन करना है और आगे किस तरीके से आप इसमें अपने केस रिपोर्ट्स कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमें आगे आकर हमें अपने केसेस को, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को इसमें डालना है। इसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम अपने टेस्ट रिपोर्ट्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट्स, ये सारा हम एक पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। वी कैन अपलोड द रिपोर्ट्स, द HRCT images, and even we can upload the testimonials of the patient in the form of audio or video files. So देखिए कैसे इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। You have to notice a very important thing that there will be an OTP, and OTP will be sent on your mail. So during the sign up process, please enter your valid working email. Ministry of Ayush just introduces the Ayush clinical case repositories for all the Ayush physicians to upload and share their success stories about treating the COVID-19 patients through all the Ayurvedic, homeopathic, Unani, Siddha streams. So it's really a wonderful step and initiation taken by the ministry. You can go through the page by clicking the link given in the description. Once you go there, you have to sign up yourself on this depository. So there is name, father's name, there are some basic informations. Then you have to enter your medical registration number of the state. Then you have to select your Ayush system, whether Ayurveda, Unani, Siddha, Yoga, Naturopathy or whatsoever. Again, you have to select your nationality, as this portal is open for all the stakeholders irrespective of their nationality. So after completing all that, you have to enter your email address and you have to create your password also. Please provide your present address, permanent address, or if you have the same, then click here the same as the present address. Now just enter this captcha over here and mark is at red, the undertaking, and now register. So once you are registered, then you are able to upload your success stories. Understanding, then I have to enter a captcha 8T98CA. So now I have to again register. OTP, great. So we have to receive OTP through my mail and again click register. Then again I have to
26801. So registration is successful. Okay, good. Now I have to sign in email. So now it's my dashboard. So I have to click here, add new cases. If it is COVID case, or if it is not non-COVID case, then COVID case. Then enter the age of the patient, the gender of the patient, the discipline. Again you have to choose here Ayurveda, and yes, if you are COVID positive or not, then we have to enter here yes or no. Okay, date of the testing, type of the testing, whether it was a rapid antigen or RT-PCR, or if there is any route, lab test, if available, then we have to click it. If not available, then left it. Imaging, if available, it's okay. Clinical presentation, asymptomatic or symptomatic. Again we have to click the fever, the cough, over here loss of taste, all the COVID symptoms. Date of appearance of the symptoms we have to mention over here. Date of resolution, it was no symptomatic since or RT-PCR negative. The severity of the disease we have to click over here, mild, moderate, severe, whether treated at home or hospitalized, breathing difficulty, present or absent, oxygen support, was patient on oxygen support or not. Then Ayurvedic medication administered, Sansani-Vati, Ayush 64, Agast Kharit ki, any one of these, or other medicine. If you have any other, if I click over here other medicine, then the field will be appear like this. So we can add anything, whatever we have given. Add details up to 20 medicines. Have you ever given any other Ayush medicine? Yes or not? Are you treating post-COVID symptoms also? Syndrome? Yes or no? Allopathic medicine was given? Yes, given or not given? Again, narrative and additive details and the other observative. Please, you can specify whatever you have given to the patients in the form of path or any instructions you like to enter over here. And now there is a very good example of things which we can upload. We can upload a file up to maximum of, in total we can add 1 2 3 4 5, we can add 5 PDF files. Here we can choose name of the file, file selected, file selected, and again you can add the JPG film file also, or MP3 file if you have any testimonial in the form of patient's testimonial or audio or video, you can add all these also. Again you have to undertake in, submit, and that's